Here take a question from exercise 9.2, question number second. Find the sum of all natural numbers lying between 100 to 1000 which are divisible multiple of 5, which are multiple of 5 या divisibility भी हो सकती है। इसमें इन टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज नहीं, बिटवीन दिस एंड फ्रॉम दिस दोनों में डिफरेंस है। बिटवीन दिस मीन्स बोथ आर एक्सक्लूडेड, बोथ आर एक्सक्लूडेड मीन्स ये दोनों नहीं लेना है। अगर फ्रॉम होता तो वहां से लेकर वहां तक पूरा अपने को इंक्लूड करनी पड़ती है। इस चीज का ध्यान रखना है इसमें। तो इस केस में सपोज बिटवीन 1000 एंड, पहले तो सीरीज फॉर्म करें अपन 1000 100 to 1000 or multiple of 5. Here first number is 105 110 up to here 995. It is a series. Here the first term is 105. First term means generally अपन क्या लेते हैं a equals to 105 and common difference it is known as d. So 110 previous term, next term minus previous term, so 105 it is equals to 5. ये भी हो गया d. It is an AP. Here given series, here given series is an AP. So here last term it is known as L, it is equals to 995. So last term or nth term equals to a plus n minus 1 into d. Let the number of term in this series be n. हमें नहीं मालूम तो हमने क्या किया, उसको n सपोज किया। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसकी। सो L इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d. Firstly, find the number of terms in this series. So L 995 equals to a 105 plus n minus 1 into d, or 995 equals to 105 plus 5, here d means 5, so 5n minus 5. Transfer this to 995 plus 5, it is 1000 minus 105, it is equals to 5n, so it is equals to 895 equals to 5n. So n equals to 895 divided by 5. So here 1, then 3, 7, 35, so 4, 9. So it means n equals number of terms is 179. Then find the sum. Then find the sum of numbers between this and this. So here Sn equals to n by 2, sum of the numbers 2a plus n minus 1 into d. और ये रिजल्ट यूज कर सकते थे, और एक और भी रिजल्ट होता है कि Sn इक्वल्स टू n by 2 a plus l. फर्स्ट और लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन, सो हियर Sn इक्वल्स टू 179 divided by 2 into a. A means 105 plus L means 995. So this one equals to 179 divided by 2, and this one equals to 1100 1100. So it is equals to 179 into 2 to 550. So this one equals to 550.
and multiply this and we get the result. So here 98450. It is the answer of this question, sum of n terms. Here next question, question number 9. The sum of n terms of two APs are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Then find the ratio of their 18th term. Means let two APs are first AP A plus D, A plus 2D and so on. And second AP are A plus D, A plus 2D and so on. So here according to condition, sum of n terms of first AP divided by sum of n terms of second AP equals to, in the ratio 5n plus 4 divided by 9n plus 6. This one, sum of n terms of first AP means n by 2, 2a plus n minus 1 into d according to first AP, and according to second AP n by 2, 2a plus n minus 1 into d, it is equals to 5n plus 4 divided by 9n plus 6. So here n by 2 cancel, and here 2a plus n minus 1 into d divided by 2a plus n minus 1 into d equals to 5n plus 4 divided by 9n plus 6. This one. Then here find their 18th term. 18th means अगर सपोज अपन बात करें T18 या A18, so here A plus 18 minus 1 into D, it means A plus 17D की बात हो रही है. मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस हमें 17 यूज करना है. अब इसमें क्या कर लेते हैं, पहले 2 भी कॉमन कर लें, कॉमन टू बोथ पार्ट, तो a plus n minus 1 upon 2 into d, and second one is also taking common 2, so a plus n minus 1 upon 2 into d, so it is equal to 5n plus 4 divided by 9n plus 6. Here cancel, means in place of n minus 1 upon 2 for 18th term, n minus 1 upon 2 equals to 17 चाहिए हमें. ये अगर इसकी प्लेस पर 17 हो जाता है तो a plus 17d क्या हो जाएगा, 18 terms. हमें क्या चाहिए था, there 18 terms. So here n minus 1 equals to 34. So n equals to 35. n equals to 35. 34 था तो n को इधर ट्रांसफर किया 35. So here putting n equals to 35. So a plus 35 minus 1 upon 2 into d upon a plus 35 minus 1 upon 2 into capital A d equals to this side 5 into 35 plus 4 divided by 9 into 35 plus 6.
So here a plus 17d divided by a plus 17d equals to 5 into 35, 5 5 ja 25, 5 3 ja 15 और 1 2 17 plus 4 divided by 9 5 ja 45, 9 3 ja 27 and 4 31 plus 6. So here it is a T या A 18 और A 18 फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन और सेकेंड सीरीज में A यूज किया है 18 इस चीज को अपन A यूज कर रहे हैं अपन तो T18 फर्स्ट एंड T18 सेकेंड टर्म सेकेंड इन दोनों के सीरीज एंड हियर 179 divided by 3 0 and 1 2 320 9 5 ja 45 and 9 27 31 35 4 27 plus 4 35 6 11 3 1 and 2 3 this one it is the answer.